नमस्कार दोस्तों, आज फिर वो हाजिर एक नया वीडियो का साथ। आज का वीडियो में बात करूँगा गाय का गोश्त क्या हिंदू धर्म में अलाउ है या नहीं। इसके बारे में जानकारी लूँगा प्रोफेसर DN झा से। आइए हम लोग पहले वीडियो देख लेता हूँ। Gopat Brahman mentions 21 jagyas, sacrifices, in which a bull was offered to Indra, then a cow was offered to Marut, a copper-colored cow was offered to Aswin, and a cow was also sacrificed to Mitra and Varun. Now, this is what we see in Gopat Brahman. The point that one has to keep in mind is that in the royal sacrifices or public sacrifices, you see sacrifices which are associated with kingship, that is royal power or authority, like Ashwamedh, that is horse sacrifice, or you see Rajasuya, that is also associated with kingship, and Vajpayee sacrifice. In these sacrifices, there is clear evidence that cattle were killed, especially the cow was killed. And this is mentioned in Taittiriya Samhita also, not only in Gopas Brahman but also in Taittiriya Samhita. The Ashwamedh sacrifice, you see, was very important, and 600 animals and birds were killed in Ashwamedh sacrifice. So you can imagine what was the importance of this particular yajna. So these are some of the yajnas which are related to kingship, to royal power. So how far then this sacrificed meat was eaten by the people? You see, in Taittiriya Brahman it is said that whatever is offered, that is, whatever beef is offered, that is food. The actual passage is Atho Annam Vai Go, that is, verily, really, the anna is go. One can interpret it in some other way, but then most people have interpreted it this way. Taittiriya Samhita also praises Agast, sage Agast, for his sacrifice of 100 bulls. And these sacrificial animals or victims were meant for human consumption, which is evident from the fact of how these animals were distributed. You see, for example, the Gopat Brahman mentions that the sacrificial victim has to divide it into 36 parts. And वो जो 36 parts हैं, जो गाय आपने मार दिया उसके 36 हिस्से होंगे, तो वो 36 हिस्सा किसको कौन सा हिस्सा जाएगा, ये गोपत ब्राह्मण में मेंशन है। जैसे अभी भी होता है कि आप जब कहीं किसी मीट सैलड के यहाँ जाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये पोर्शन दो या ये वो पोर्शन दो या ये पोर्शन दो, इस तरह की बात तो होती है। तो ये गोपत ब्राह्मण में लिखा हुआ है, और जो शख्स गाय को मारता था उसको समित्र कहते थे, SAMTR, समित्र। So
So what I would say, that sacrifice and sustenance went hand in hand during the Vedic period, or even later when there was sacrifice performed. Now I think I'll cut short some portion, but I would like to mention that it is not only for big sacrifices or royal sacrifices that cows were killed. Cows were also killed for small domestic sacrifices, domestic rituals. For example, for agriculture. If there is beginning of agricultural activity, then there is a sacrifice, and this sacrifice is called Shulagava. That is sacrifice of this ox of the spit. This was one sacrifice. The other sacrifice was, you see, on the occasion of the arrival of a guest or reception of the guest. If you have a guest, then, and what kind of guest? Your teacher, your son-in-law, your son-in-law's father, or your son's father-in-law, and teacher, and of course a Brahmin. So, because Brahmins are never the losers in an early society, they are always the gainers. So you can't leave them out. So this was another ritual, and this ritual was called Madhuparak. But it had other name also, that is Argha. In the Rig Veda, the word is Argha, but later on it became more popular to call it Madhuparaka than guest reception. So this was another occasion when cows were killed. Marriage was an important occasion, and there were several contexts in the marriage ceremony when the cow killing was required. And since, you see, for the guest, killing of cow was compulsory, therefore Panini, the grammarian, you may have heard his name, I don't know, Panini uses a word, Gogna, G-O-G-H-N-A, which means one for whom the cow is killed. This is how Sanskritists interpret it. There may be difference of opinion about the compound in which this word is used, but the word Gogna means one for whom the cow is killed. Now, and this is because of the frequent killing of cows in Madhya Pradesh. Then, you see, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि एक सेरेमनी होती है when a woman is pregnant, then after 3 or 4 months of pregnancy, you have a ritual called Godbhari. And in the Dharma Sutras, there is the ritual Simantonayan. This is equivalent to Godbhari. Simantonayan would mean parting of the hair. Now, on this occasion, it was absolutely necessary to kill the cow. And then, you see, in lifetime, if you kill the cow, then in death also the cow must accompany you. And so, in Shraddha, that is after the death, when you perform funerary rites, then you have to please the maids.
श्राद्ध किस लिए करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि पितृ जो हैं उनको हम लोग खुश रखें, वो हमको ऊपर से आशीर्वाद देते हैं आसमान से. So you know this shraddh after death, cows were killed so that the males are pleased, and males had to be well fed. You see, in the Dharma Sutras, this ritual is described in great detail, and it is said that the flesh of the cow gratified the pitris, that is dead ancestors, for a year. साल भर तक कुछ तकलीफ नहीं होगी, आप उनको श्राद्ध में बीफ खिला दीजिए. सो संवत्सरम गव्येन प्रीति, ये लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, ये किसी पंडित ने लिखा है, धर्म हिरण्यकेशी गृह सूत्र में लिखा है. तो इसलिए फिर उसके बाद बफेलो, भैंस भी, वो भी चलेगा काम, उससे भी. फिर वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक गोट्स, ये सब भी अगर खिलाएंगे तो साल भर तक मेंस जो हैं, पितृ जो हैं, वो खुश रहेंगे. एंड you see, apart from this, there used to be a community function, community meeting, where animals were killed. It was called Mahabharat. It was a kind of bacchanal communal function. इसमें खाना पीना जोरदार होता था, आसपास के लोग आते थे और खूब मौज मस्ती होती थी. तो उसमें खूब जानवर मारे जाते थे, तो उसका नाम महाभारत रखा गया. और इसका जिक्र बहुत जगह आपको मिलेगा. और उसके बाद तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है ही, जो मैं स्किप ओवर कर रहा हूँ. ये सारे एविडेंस के बावजूद काफ़ी लोग हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि गाय को लोग नहीं मारते थे आज लोग, या वैदिक पीरियड में गाय का हनन नहीं होता था, गोहत्या नहीं होती थी. उसका आधार क्या है ये मैं आपको बता दूं. वो उनका आधार यह है करने का कि वेदों में, ये उन वैदिक टेक्स्ट में 2 वर्ड हैं जो कि यूज़ किए गए हैं. 4 जगह है ये वर्ड. एक है अग्नि और एक है अग्निया. अग्नि हुआ मेल के लिए और अग्निया हुआ फीमेल के लिए, मेल एंडिंग और फीमेल एंडिंग. ये 4 जगह यूज हुआ है ऋग्वेद और अथर्ववेद में. इसका मतलब ये है कि नॉट टू बी किल्ड. तो इसी के बेसिस पर जनरली जो ये RSS वाले होते हैं, ये जो लिटरल रखेंगे जितने आपको मिलते हैं, जो मॉबलिंग लिंचिंग करते हैं, वो आपको इसी सब आधार पर कर देंगे कि अरे वो तो अग्निया है, गाय अग्निया है, ये लोग मारते हैं, ये मुसलमान हैं, इनको क्या पता है क्या होता था. और वो यही आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं. तो उनका जो बेसिस है वो यही है कि 4 जगह ऋग्वेद और अथर्ववेद में ये वर्ड यूज हुआ है. और इसमें कई जगह तो ये फेमिनिन एंडिंग में यूज हुआ है, कई जगह मेल एंडिंग में यूज हुआ है. तो एक तो ये उनका बेसिस है, इसलिए कहते हैं कि गाय सेक्रेट है. दूसरा जो उनका आर्गुमेंट है वो है कि गाय के लिए वेदों में कुछ ऐसे एपिथेट्स यूज किए गए हैं या कुछ ऐसे उपमाएं यूज की गई, मेटाफर यूज किया गया है. जैसे कि गाय को पृथ्वी भी कहा है, गाय को
अदिति भी कहा है जने, फिर गाय को मदर ऑफ गॉड्स भी कहा है, गोजात एक कैटेगरी है गॉड्स की, उसका भी जिक्र आया है वेदों में। तो इसलिए भी लोग कहते हैं कि जो गाय की हत्या नहीं होती थी। लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता है कि गाय सेक्रेट था, गाय सेक्रेट थी, ये तो साबित नहीं होता है। ये 4 रेफरेंसेस है। भाई कुछ लोगों के लिए सेक्रेट रही होगी और वो मैं बताने जा रहा हूँ कि किसके लिए सेक्रेट थी, मैं अभी बताऊँगा आपको, लेकिन सबों के लिए से सेक्रेट नहीं थी। ये जो आर्गुमेंट है ये बहुत कारगर आर्गुमेंट नहीं है कि गाय सेक्रेट थी उस जमाने में। अब सवाल ये उठता है कि अग्नियाँ या अग्नियाँ तो इसलिए यूज़ किया गया होगा कि गाय को लोग उसके इकोनॉमिक वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते होंगे, इसलिए उसको अग्नियाँ कहेंगे या अग्नियाँ कहेंगे, नॉट टू बी स्लेन कहेंगे, क्योंकि वेदों में इसका जिक्र है कि when milk they gave additional nourishment, they produced oxen which were used for drought animals. Then cattle hide was used in various other ways. The jha, bow string, this was made of cattle hide. आजकल भी जो आप वो साउथ इंडियन मृदंग देखते हैं वो बगैर काउ हाइट के नहीं बन सकता। इसे यू कैनॉट हैव दैट मृदंग विदाउट काउ हाइट। एंड ये मुझे किसी ऐसे लोगों ने कहा जो कि खुद मृदंग के स्पेशलिस्ट हैं, मृदंग वादक हैं। ऐसे त्यागराज थे, उन्होंने एक आर्टिकल आउटलुक में लिखा था, त्यागराज ने आर्टिकल लिखा था स्टीफन आनंद ने, और उसमें उसने जिक्र किया था कि कोई भी मृदंग जो है वो आप बगैर काउ हाइट के नहीं बना सकते हैं। तो वैदिक ज़माने में भी नहीं बना सकते थे, बो स्ट्रिंग नहीं बना सकते थे, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह के नहीं बना सकते थे। सो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये सब आर्गूमेंट की गाय सेक्रेट थी और वो अग्नि थी, ये सब बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, और वो ये आप लोगों को मानने तो अच्छा है, वो ये कि ब्राह्मणों की जो गाय थी वो इनवायलेबल थी, उसको आप नहीं मार सकते थे। गाय को ब्राह्मण्स का वाज इनवायलेबल। ये वेदों में लिखा हुआ है कि मेरी गाय अगर है तो आप नहीं मारेंगे, आपको कोई हक नहीं। आपको अगर मारना है तो किसी और की गाय मार लीजिए, मेरी गाय नहीं मारेंगे। सो वजह इसकी थी कि ब्राह्मणों को जो है गाय दक्षिणा में मिलती थी, और इसीलिए वो ब्राह्मणों को इंटरेस्ट रहता था कि मेरी गाय को कोई नुकसान नहीं। और ब्राह्मण लोग बहुत ही लालायित होकर अपनी दक्षिणा के लिए बैठे रहते थे कि जग तो करा दिया, अब दान मान भी हो जाए तो गाय मिल गई, गाय बहुत पवित्र है हमारी, इसको कोई नुकसान नहीं होगा। अथर्व वेद में एक राजा को वार्निंग दिया है ब्राह्मणों ने, जो मैं आपको सुनाता हूँ कि ओ किंग नृपति, the gods did not give you that cow to you to eat. You see,
O warrior, Rajanya, do not desire to eat the Brahman's cow, because she is not to be eaten. That is anadyam. अनाद्यम वर्ड यूज हुआ है वहाँ पर। ब्राह्मणों की गाय जो है वो खाई नहीं जा सकती है। तो ये आप कह सकते हैं कि ब्राह्मणों की गाय जो थी वो थोड़ी सी, मेरा ख्याल है, स्पेशल स्टेटस एंजॉय करती थी। उसको आप ब्राह्मणों की तरह ही वो भी स्पेशल एंजॉय करती थी, उसको आप मार नहीं सकते थे। तो ये जो है चीज़, इसको मान लेने में ही खैरियत है कि ब्राह्मणों की गाय को नहीं मानेंगे। अच्छा, नाउ आई थिंक वी विल turn to another important thing, that you see, while all these developments were taking place in the Vedic period, what we see in the post-Vedic period is that you have the rise of Jainism and Buddhism. Now, Buddhism जो है वो अहिंसा डॉक्ट्रिन का बहुत बड़ा पोषक था। जैनिज्म जो है वो भी अहिंसा धर्म का पोषक था, पर अहिंसा परमो धर्म। तो ये सारी बातें जो होने लगी, तो वैदिक सेक्रीफाइस को एक किस्म का चैलेंज हुआ कि जो ब्राह्मण लोग जो यज्ञ करते हैं और मारते हैं और जो कुछ करते हैं, उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। वैसे अहिंसा डॉक्ट्रिन की शुरुआत बुद्धिज्म और जैनिज्म से नहीं हुई है। वो भले ही लोग नाराज हों, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म की वजह से अहिंसा डॉक्ट्रिन की शुरुआत हुई है। उसकी शुरुआत कहीं और है, और वो बात कर सकते हैं हम बाद में उसके। Now, बुद्धिज्म के बारे में जैसे मैं कह रहा था आपसे कि बुद्धिज्म ने वैदिक सेक्रीफाइस को बहुत बड़ा चैलेंज दिया, उसी तरह आपको ये भी पता होगा कि गौतम बुद्धा जो थे वो he died of pork meal. I hope you remember. Gautam Buddha died of pork meal. In fact, I like pork better. I used to like pork better than beef. Gautam Buddha took pork, and he died of eating pork. The word that is used is sukar magda. That was the word used. अब उसको लोग इंटरप्रेट करते हैं कि सूकर मद्दब जो है वो मशरूम है। सवाल ये है कि जहाँ भी इस तरह का रेफरेंस आता है, लोग कहते हैं कि ये मशरूम है। तो मशरूम है कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको जिक्र ही कहीं नहीं मिलेगा। तो खैर, गौतम बुद्धा हालांकि अहिंसा के पोषक थे, लेकिन he died of pork meal. Ashoka was against killing of animals, but even he did not prohibit the killing of cow in his kitchen. He prohibited the killing of animals for his kitchen.